Good afternoon student. Welcome to my channel Study Home. तो काली रो वीडियो रे हमें 5th क्लास रो इंग्लिश चैप्टर 1 टी कंप्लीट करथिले। तो एबे चैप्टर 2 टी की जिबा 5th क्लास रो इंग्लिश बुक रो। देखो चैप्टर टी कोन अछि गन विथ स्कूटर। गन विथ स्कूटर माने स्कूटर सहित चली जिबा। तो हमें चैप्टर टी पढ़िले जानिबा कोन स्कूटर सहित चली गला। तो चैप्टर पूर्व देख ये गोटे मैचिंग देइची एपटे किछिटा खेलर पिक्चर देइची एपटे से खेलर ना देइची। तो तुमको खेलर पिक्चर अनुଯାयी एपटे खेलर ना सहित मैचिंग करिवार अछि। तो देख फास्ट खेलर फास्ट को खेलर पिक्चर देइची फुटबॉल। तो देख फुटबॉल एटी कोठी अछि एटी एटा 1 नंबर। तापर सेकेंड खेलर ना वॉलीबॉल। तो ये देख वॉलीबॉल कोठी अछि एटा गला 2 नंबर। 3 नंबर कोन देइची क्रिकेट। ए देखो ऊपर ही क्रिकेट रो ना देइची एटा 3 नंबर। तापरे 4 नंबर रे अछि हॉकी एपट देखो हॉकी एटी देइची। 5 नंबर रे अछि बास्केटबॉल। तो एटी देखो 5 नंबर रे हे गला फर्स्ट हला फुटबॉल सेकंड टा वॉलीबॉल थर्ड टा क्रिकेट फोर्थ टा हॉकी आ फिफ्थ टा बास्केटबॉल। सरला बिले मैचिंग टा एबे टेस्ट को जिबा। तो आरंभ करिबा टेक्स्ट टी कोन अछि लेट अस रीड। It was summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. एटा गोटे खरा दिन रो अपराह्न आफ्टरनून माने लिखि दियो पिले जानिनियो अपराह्न। ए गोटे खरा दिन रो अपराह्न थिला। गोपी वाज सिटिंग इन द बरंडा। गोपी बरंडा रे बसी थिला रीडिंग ए बुक बसी कोन करथुला ना गोटे बही पढुथुला। तो टोटल लाइन नो मीनिंग कोन होबो गोटे खरा दिन रो अपराह्न रे गोपी बरंडा रे बसी बहीटे पढुथुला। तो फर्स्ट लाइन टी गला सेकंड लाइन कोन छी सेकंड पैराग्राफ टी suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. He thought what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. तो देखो सेकंड पैराग्राफ टी suddenly he heard something rustling past. हठात से गोटिए सुखिला हालुका जिंस पास करी गला भलिया शब्द सुनिला आउ से and falling with a thud in the garden और सेही सुखिला हालुका शब्दटी हठात करी गोटिए भारी जिंस परी तांको गार्डन रे पड़ीला भलिबा शब्द हैला। कोन हैला हठात गोटिए रसलिंग माने सुखिला हालुका शब्द किछि होबा and falling with a thud माने गोटे भारी जिंस पड़ीला भलिया शब्द होबा। तो कोन हैला एटी गोटे सुखिला हालुका शब्दटे गला आउ तांको गार्डन रे बा बगीचा रे गोटे भारी जिंस पड़ीला परी शब्द ताको हैला। He thought what could it be? से भाबिला एटा कोन होई पारे perhaps it was a mango falling from the tree. जेते बेले गोटे भारी जिंस पड़ीला भलिया शब्द होला से भाबिला एटा कोन होई पारे what could it be? Perhaps it was a mango falling from the tree. बोध हुए गोटिए एहा गोटिए आंबो होई पारे जहा कि गछरु पड़ीला।
से भारी शब्दटी शुणी भाविला बोध हुए यह गोटे आंब होइपारे जहाँकि गछरु पड़िला। इमिडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। से तुरंत ता बहीटी को साइड करिकी थोइला आ उठिकी बगीचा आड़कू धाइला आंब पड़िछि ना नहीं देखिबाकू। तापरे 3 नंबर टी देखिबा। तो फास्ट 2टा पैराग्राफ गला पिले, बे 3 नंबर टा देखिबा। He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hands. It was a hockey ball. से बगीचा सारा जो मोटा घास होइथिला बगीचा पाखरे से बगीचा सारा खोजिला। गार्डन फेंस माने बगीचा रे काठर जो बाड़ दिया है था बगीचा चारिपटे ताकू कह जाए गार्डन फेंस। से बाड़ चारिपटे घास बुदा सबु आड़े खोजिला। He found nothing, से किछि पाइला नहीं। He looked among the bushes, से बुदा मूल मध्य देखिला। Nothing was there again, सेठारे मध्य किछि पाइला नहीं। Then his eyes fell on a heap of dry leaves. गोटे सुखिला घासर मेंचा उपरे ता आखि पड़िला। There was a white ball on the heap. से सुखिला घास ऊपर से कौन आखि पड़िला पर देखिला ना गोटे व्हाइट बॉल, गोटे धला रंगर बॉल थिला। गोपी reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. से धला बॉल पाखरे सेठी पहुंचला और ताको हाथ रे धरिला। सेटा कौन थिला? It was a hockey ball. यह गोटे हॉकी बॉल थिला। 3टा पैराग्राफ सरला पिले, बे 4 नंबर को जिबा। गोपी thought wondered whose ball could this be? He looked around and looked outside the gate, but could see no one. Just then he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It's very hot. Come inside. Gopi thought wondered. गोपी आश्चर्यर सह भाविला whose ball could this be? यह कहार बॉल होई पारे? He looked around, से चारियाडे देखिला and looked outside the gate, गेट बाहर को मध्य देखिला। But could see no one, but किंतु से कहा को देखि परिला नहीं। Just then he heard his mother calling. तापरे सांगे सांगे ता माँ डाकुथिबार से सुनिला, गोपी what are you doing out in the garden? गोपी बगीचा बाहर कौन करूछ तमे? It's very hot, come inside. एठार बहुत खरा होइची, जल्दी घर को आस। तो ता माँ एबे डाकिले से तापर 5 नंबर पैराग्राफ टू जिबा। गोपी went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, I cannot keep this ball for myself. I will ask other. गोपी घर भीतर को गोपी went inside, गोपी घर भीतर को गला and drank a glass of water. आ गोटे ग्लास पानी पीला। He lay on the mat, सोपा मसीना ऊपर से सोइला बा lay down पड़ी रहिला and said to himself, निजो को निजे कहिला, I cannot keep this ball for myself. एही बॉल टी मो पई रखि परिबि नाही। I will ask other, मो अन्य मानन को पचारिबि कि बॉल टी कहार। तबे 6 नंबर। In the evening, Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey every day. सेई दिनर संध्या बेला कथा। सेई संध्या बेले गोपी ता नियर बाय पाख खेल पड़िया को प्लेग्राउंड माने खेल पड़िया
ଖେଳ ପଡିବା ପାଖକୁ ଗଲା, ଯୋଉଠିକି ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏଭ୍ରିଡେ ମାନେ ସବୁଦିନ। Friends, this afternoon I found a ball. Did any of you lose your ball recently? ସେ ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପାଇଲି। Did any of you lose your ball recently? ତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏବେ ତମର ବଲ୍ ହଜେଇଛ କି? ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଲୁଜ୍ ମାନେ ହଜେଇବା। ତାପରେ ମନୋଜ said, I lost a ball 4 months ago. Gopi said, so the ball that I found cannot be yours. ମନୋଜ ସେଠି କହୁଛି I lost a ball 4 months ago. ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ବଲ୍ ହଜେଇଥିଲି 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋପୀ said, so the ball that I found cannot be yours. ଗୋପୀ ସେଠି କହୁଛି ତ ମୁଁ ଯୋଉ ବଲଟି ପାଇଛି ସେଟା ତୁମର ହେଇପାରିନଥିବ। ତାପରେ ରମଣୀ 9 number paragraph. ରମଣୀ said, then the ball is mine. ରମଣୀ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବଲଟି ମୋର ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଗୋପୀ ପଚାରୁଛି how do you know? asked ଗୋପୀ. What color is it? ଗୋପୀ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଛ? ଏହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଥିଲା କୁହ? ତାପରେ show me the ball and I will tell you, said ରମଣୀ smilingly. ରମଣୀ ହସି କରି କହୁଛି show me the ball and I will tell you. ମତେ ବଲଟି ଦେଖାଅ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ତାପରେ another friend Deepak said that his father had bought him a brand new football the day before. The ball I found is a hockey ball, said Gopi. another friend Deepak ମାନେ ତାର ଗୋପୀର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକ କହୁଛି that his father had bought him a brand new football the day before. ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ବାପା ତାକୁ ଗୋଟେ brand new ମାନେ ନୂଆ ଫୁଟବଲ ଟେ କିଣିକରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। The ball I found is a hockey ball, ଗୋପୀ said. ଗୋପୀ କହିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବଲଟି ପାଇଛି ତାହା ଫୁଟବଲ ନୁହେଁ, ତାହା ହକି ବଲ୍। ତାପରେ everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj took it away from Gopi and threw to Deepak. ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। Gopi took out the ball from his pocket. ଗୋପୀ ବଲଟି ତା ପକେଟ ରୁ ବାହାର କଲା। Manoj took it away from Gopi and threw to Deepak. ମନୋଜ ଗୋପୀ ଠାରୁ ସେଇ ବଲଟି ନେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦୀପକ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। Seeing this, Gopi said at the top of his voice, Stop! Say stop! Let's play before it gets dark. ଏହା ଦେଖିକରି ଗୋପୀ said at the top of his voice. ଗୋପୀ ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା stop, ରହିଯାଅ। say stop, ମୁଁ କହିଲି ରହିଯାଅ। Let's play before it gets dark. ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖେଳିବା। Manoj went to the goalpost as he liked to be a goalkeeper. Gopi stood at the center of the field, holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak, who threw the ball towards Ramani. Ramani hit the ball with the stick and it went to Joy. Manoj went to goalpost as he liked to be a goalkeeper. Manoj goalpost ପାଖକୁ ପଳେଇଲା କାରଣ ସେ ଗୋଲକିପର ହବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସବୁବେଳେ। Gopi stood at the center of the field holding the hockey stick. ଗୋପୀ ଫିଲ୍ଡର ମାନେ ଖେଳ ପଡିବାର ପୁରା ମଝିରେ ରହିଲା ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି। He passed the ball to Deepak. ସେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲଟି ଦୀପକ ପାଖକୁ ପାସ୍ କଲା। Who threw the ball towards ରମଣୀ। ତାପରେ ଦୀପକ ଯିଏକି ବଲଟି ରମଣୀ ଆଡକୁ ପକେଇଲା। ରମଣୀ hit the ball with the stick and it went to Joy. ରମଣୀ
से हॉकी स्टिक द्वारा बॉल टी को मारिला जहाँकि जय पाखु गला बॉल टी कमन तापर 16 नंबर पैराग्राफ टी कमन जय play the shot and drive it towards the goal post, Manoj said loudly. तापरे मनो कमन जय आसे play the shot and drive it towards the goal post. शॉट टी खेल आउ एहाकू गोल पोस्ट आड़ी की चलेइने मनोज सेड लाउडली मनोज एठी जय को उच्च स्वर रे कहूची जय आसे शॉट टी खेल आउ एहाकू गोल पोस्ट आड़ी की नै की चल देन तमरडा लास्ट पैराग्राफ अछि देखिबा जय टाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विथ द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल he hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist, who was unaware of what had happened, drove fast. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. तो देखिबा बुझिबा जय टाइटेंड हिज रिस्ट जय ता हातर मुठा को टाइट कला अराउंड द स्टिक विथ द फ्लैट साइड माने जो हॉकी स्टिक रो फ्लैट साइड को से धरी थिला सेही चारिपटे ता हातर मुठा को से टाण कला बॉल टी को टच करिकी he hit the ball so hard that it went past the playground gate. से एते जोर बॉल टी को हिट कला जे ताहा प्लेग्राउंड रो गेट पास करिकी पळेला and fell into the basket of a passing scooter. आउ रास्ता रे जाउथबा बा पास करूथबा गोटे स्कूटर रो बास्केट रे ताहा पड़ी गला. तो स्कूटरिस्ट माने एठी जे स्कूटर रो ड्राइवर ताकू कह जायछि स्कूटरिस्ट who was unaware of what had happened जे कि ए सब कोन घटी से जानि नथिला ता विषय रे अजणा थिला unaware माने अजणा ड्रॉप पास्ट गाड़ी चले करी पास करी गला by the time the children ran to the gate से समय by the time से समय रे पिला मन जो माने खेलुथिले से माने गेट पाखु को दौड़िले The scooter was gone. Scooter टी चली गला and so was the ball. आउ ता स्कूटर सहित बॉल भी चली गला. They looked at each other and burst into laughter. आउ हसरे दे समस्ते निज each other को देखिले माने जण जण को देखिले आउ burst into laugh आउ हसरे फाटी पड़िले. तो पिला माने इठी जानि पारलो टाइटल थिला कोन स्टोरी रा गन विथ स्कूटर सहित कोन चली गला ए स्टोरी रु तमे जानि पारथिबो. तापरे एबे देखो न्यू वर्ड किछि तम बुक रे देइछि burst into laughter suddenly started laughing loudly हठात किना जोरे समस्त मिसे हसिबा आरंभ करिबा. Fence a structure made of wood, metal, etc. that surrounds a piece of land. माने गोटे जागार किछि अंश को बाड़ करिबा पई काठर कि मेटल रो किछि जिंस रो स्ट्रक्चर को फेंस को जाय. Recently not long ago माने बहुत दिन तळर कथा नो रिसेंट माने एबे रो कथा recently. Rustling the sound of light dry things moving together किछि हालुका जिंस पास करिवार साउंड. स्कूटर इज ए पर्सन हु राइड्स ए स्कूटर लोक जे कि गोटे स्कूटर को चलाउची स्कूटरिस्ट को जाय ताकू. टाइटन टू होल्ड द समथिंग मोर फ्रीमली गोटे जिनिस को अति टाणर सहित धरी रखिबा. थर्ड साउंड ऑफ ए हेवी थिंग फॉलिंग टू द ग्राउंड माटी रे किछि हेवी जिंस बा भारी जिंस पड़िबार साउंड होबा को थर्ड को जाय. अनवेयर नॉट नोइंग दैट समथिंग इज हैपनिंग कोन घटुची ताहा विषय रे अजणा को जो जानि नथिबा किछि कोन घटुची ता विषय रे जानि नथिबा
लोक को अनवेयर बा अजणा कह जाए। तो ये वर्ड मीनिंग तो देछि कहिदेली पिले बुझी पारथिबो। तापरे एबे देखो कितरा क्वेश्चन देछि तमरो 12टा। Who are there in this story? के अछंती पिले? There are Gopi and his friend Manoj, Deepak, Ramani, Joy and the scooter driver. के पिले जानी पारलो? There are Gopi and his friends Manoj, Deepak, Ramani and the scooter driver. Where was Gopi sitting? Gopi was sitting on the veranda. कोठी पिले? Gopi was sitting on the veranda. तापर देखो what sound did Gopi hear before he went to garden? Gopi heard the sound of rustling. एठी देइछि देखो पिले देखो एठी rustling. Suddenly he heard something rustling. तो एठी को वर्ड से सुनी थिला गार्डन को जिबा पूर्वरु? rustling. तापर गोपी ran into the garden to see what चारटा ऑप्शन देछि प्ले वर्क टू सी व्हाट फेल मीट हिज फ्रेंड। तो एठी कोन होबो से कोन पई जाइथिला गार्डन भितर को? टू सी व्हाट फेल। तो एठी केते नंबर? 3 नंबर ऑप्शन टा होबो बिले गोपी ran into the garden to see what fell। तो तापर where did गोपी search for the ball? से कोठी कोठी खोजिथिला देखो बिले यदि टेक्स्ट रे देखे दोची कोठी कोठी से खोजिथिला between the thick grass near the garden fence। Nothing, he looked among the bushes, nothing was there again। then he कोठी पिले 3टा जगह between the thin grass near the garden fence and among the bushes। जानि पारलो पिले तो कौन होबो? between the Gopi searched for the ball between the thick grass near the garden fence and near among the bushes। इटा सरला पिले एबे 6 नंबर जा 5टा क्वेश्चन बुझी परथिबो बोली पचार बुझी परथिबो बोली भाबुची पिले न बुझी पातले कमेंट सेक्शन में पचारिबो। 6 नंबर को जा डू यू थिंक गोपी विल कीप द बॉल विथ हिम और ट्राई टू रिटर्न इन टू इट्स ओनर? आई इट कोन लिखबो पिले आई थिंक गोपी विल गोपी विल ट्राई टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर। कोन पिले इट आंसर 6 नंबर आई थिंक गोपी विल ट्राई टू रिटर्न इट टू इट्स ओनर। 7 who took away the ball from गोपी? गोपी ठारू किए बॉल टी आनी थिलारी? एटी देखो बिले मनोज took it away from गोपी। किए आनी थिलारी? मनोज। Who took away the ball from गोपी? Manoj took away the ball from गोपी। Where did the ball fell when Joy hit it? बॉल टी जते बेले जॉय ही मारी थिला ताहा कोठी पड़िथिला देखो बिले it went past the playground and fell into the basket of a passing scooter। कोठी पिले into the basket of a passing scooter। एठी कोन लिखिबो पिले 8 नंबर आंसर when Joy hit it the ball fell into a
into the basket of a passing scooter. ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ବାସ୍କେଟ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା. Was the scooterist aware of it? Which word supports your answer? ସ୍କୁଟରଟି ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା କଣ ତା ବିଷୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି? ସ୍କୁଟର ବାଲା ତ ଜାଣି ନଥିଲା. No, the scooterist was not aware of it. Was not aware of it. Which word? The word unaware. ଏଠି ଦେଖ ପିଲା unaware word ଟି ଅଛି. unaware ଏଇ word ଟି ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ? The word unaware supports my answer. Why did everyone laugh at the end of the story? When they see that the ball fell into the basket of a passing scooter and the scooterist passed away, so everyone laughed at the end of the story. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ବଲ୍ ଟି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟର ବାସ୍କେଟରେ ପଡିଗଲା ଆଉ ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଟି ନ ଜାଣିକି ଏହା ସ୍କୁଟର ନେଇକି ପଳେଇଲା ତ ସମସ୍ତେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ. ତ କଣ ଲେଖିବ? When everyone see that the ball fell into the basket of a passing scooter and the scooterist passed away unaware of it, then everyone laughed at the end of the story. ତାପରେ imagine what happens to the hockey ball after it taken away by the scooter. Where does it go? Who finds it? When the ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟର ବାଲାଟି ସେ ପାଇଥିବ ସେ ବଲ୍ ଟି ପଛରେ ତ ବଲ୍ ଟି କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ କଣ କିଏ ତାକୁ ପାଇଥିବ ଦେଖ ବିଲେ. When what happens to the hockey ball after when it is taken away by the when the hockey ball is taken away by the scooter, the scooterist will keep it for himself. Where does it go? It goes to the scooterist. Who finds it? Scooterist finds it. ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ସ୍କୁଟର ଏଠି 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ? ତ ଏଟା ସେ ଅବଭିୟସଲି ସ୍କୁଟର ଡ୍ରାଇଭରଟି ତା ପାଖରେ ରଖିଥିବ ସିଏ ତାରି ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବ ହକି ବଲ୍ ଟି ଆଉ ସିଏ ହିଁ ପାଇଥିବ ସ୍କୁଟର ଡ୍ରାଇଭରଟି. ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ. Notice in the picture that scooterist is wearing a helmet. Why is it important to wear a helmet? ଦେଖ ସ୍କୁଟରିଷ୍ଟ ହେଲମେଟ ଟି ପିନ୍ଧିଛି. ଏଟା କଣ ପାଇଁ important? It is important to save your head injury বা brain injury in the time of accident. ମାନେ ହଠାତ୍ ସଡନ accident ରୁ ତମର brain injury କି head injury କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ହେଲମେଟ ଟି ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ. ତ should the biker riders also wear helmets? Yes, the bike riders should also wear helmets. Bike rider ମାନେ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ helmet. ତ ଏଟା କଣ ପାଇଁ important? Why is it important to wear a helmet? It is important to wear a helmet to save to avoid head injury or brain injury in the time of sudden accident, road accident. Should ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି next question? Should the bike rider also wear helmets? Yes, the bike riders also should wear helmets. ତାପରେ ଦେଖ post reading activity କେତେଟା ଅଛି? Gopi proper your teacher will read aloud the first page of the story. Gone with a scooter. Listen to it attentively
and fill in the blanks. प्रथमे फास्ट पेज टी कोन देइची पढ़ी दबा. It was a summer afternoon. Gopi was sitting in the veranda reading a book. Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. He thought what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into garden. He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hands. It was a hockey ball. देखो बिले एपटे fill in the blanks जोरा देइथला देख कर दबा. Gopi was sitting in the dash one afternoon veranda. He heard something falling with a dash in the garden. Thought. एट देखो पिले देखो देखै दउची. Gopi was sitting in the veranda falling with a thought. देखि पारलो पिले कोन हबो एठी. Gopi was sitting in the veranda one afternoon. He heard something falling with a thud. Thud thud in the garden. He thought that a dash fell from the tree. से कौन पड़थला भाबितला mango. He thought that a mango. He ran into the garden. तो एठी दिटा आको कौन हबो. एटा हबो veranda तापरे falling with a thud. एटा mango तापरे ran into the garden. He looked among the bushes. कोन पिले एटा हिजबो garden. Fifth hiजबो bushes. His eyes fell in the heap of a dry leaves. He found a white hockey ball. तो माधुर कहि दउची पिले एक नंबर रु फास्ट फिल एक नंबर टा हबो fill in the blanks रे veranda. He heard something तापरे सेकंड नंबर टा हबो third thud. थर्ड नंबर टा हबो mango. फोर्थ टा garden. फिफ्थ टा bushes bushes. सिक्स्थ टा हबो dry leaves leaves. तापरे सेवेंथ हबो he found a white hockey ball. तापरे एठी देखो 3 नंबर को जिबा पिले सी देइची जो ए सब वर्ड रे डबल ओ अछि किंतु को प्रोनाउंसिएशन टा टिके लॉन्ग होउची सेही वर्ड को हमें सर्कल करिबा. तो देखो पिले फूड एटा तो होउनी फूड. स्पून एटा होउची स्पून. ब्लूम एटा होउची लुक बुक एटा होउनी. स्कूल मरून. तो ए चारटा होउची पिले तापर होउनी सुक फूड मून टू. तो कौन कौन होला पिले एपटे 5 आउ 6 एपटे 2 आउ 5 आउ 7 एपटे 2 आउ 4 टा हला कौन कौन हला स्पून ब्लूम स्कूल आउ मरून. तो नेक्स्ट को जिबा पिले
कौन अच्छी read the story and arrange the sentence in order as they happened in the story. Write the serial number in the box. तो स्टोरी रो हिसाब रे हमको ए सेंटेंस पूरा सजेबार अच्छी सीरियली नंबरिंग करिकी. फास्ट कौन हबो one afternoon Gopi was sitting in the veranda. एटा हबो फास्ट. He heard something fall in the garden. एटा हबो सेकेंड. तापरे he found a hockey ball. एटा थर्ड. सॉरी पिले एटा थर्ड नुह. he second होची he heard the something fall into the garden. तापरे हबो he ran into the garden. एटा 3 नंबर. एटा 4 नंबर हबो पिले he found a hockey ball. तापरे 5 नंबर हबो Gopi and his friends play with the ball. 6 नंबर हबो his friend hit the ball hard. 7 नंबर हबो the ball went past the playground and fell into the basket of the a passenger. तो मात्र कहि दोची पिले फास्ट हबो one afternoon Gopi was sitting in the veranda. First. तापर सेकेंड हबो he heard something fall in the garden. Second. थर्ड हबो he ran into the garden. Third. तापर he found a hockey ball. Fourth. Fifth हबो Gopi and his friends play with the ball हबो fifth. Sixth हबो his friend hit the ball hard. It habo sixth. Seventh habo the ball went past and the past the playground gate and fell into the basket of a passenger scooter. It habo seventh. तो एटी सरला पिले 1 नंबर टा 2 नंबर देखिबा कोन होची. Suddenly he read the following passage carefully. Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. He thought what it could be. Perhaps it was a mango falling from the tree. Immediately Gopi put his book aside, got up and ran into the garden. He searched in between the thick grass near the garden fence, but he found nothing. But he found nothing. He looked among the bushes. Nothing was there again. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hands. It was a hockey ball. Now circle the word in the passage for expression words. Write the serial number of the expression in the circle. The sound of light dry things. It habo kon pile rustling. Rustling. The sound of heavy thing falling to the ground. It habo kon pile thud. Kon habo pile thud. Without interval of time. Without delay. Immediately. तापर a structure made of wood or metal that surrounds a patch of land. एटा हबो कोन पिले fence. Look for something. Searched. A game played with the help of ball and sticks. Hockey. तो मु आउथर कहि दोछि पिले कोन कोन. First the sound of light dry things. Rustling. So second ta kono the sound of a heavy thing falling to the ground. Third
तापर विदाउट इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट तो ये वार्ड गुरा पिले जानी पारथिबो भाबुची जो बाटी जानी पार नथि मते कमेंट रे जणैबो एटी कोन द साउंड ऑफ लाइट राइटनिंग एरा सब वार्ड गुरा मु कहि देली तापर देखिबा लेट अस राइट कोन अछि देखो बिलेट जो देइची चारिपटे सन प्लस राइज सनराइज सन प्लस सेट सनसेट सन प्लस साइन सनशाइन सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर तो ये आम बॉल सहित भी मुझे आउ थे कही दूसरी सन प्लस सेट सनसेट सन प्लस साइन सनशाइन सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर एपटे गला पिले एपटे बॉल सहित कौन अच्छी देखा एपटे सीना पिले सन सहित कले किंतु एपटे फास्ट ए वर्ड सहित परे बॉल को जॉइन करबा बेस प्लस बॉल बेसबॉल फुटबॉल टा तो दे देछि पिले बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल वॉली प्लस बॉल वॉलीबॉल मात्र कहि दोछि पिले बेस प्लस बॉल बेसबॉल बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल प्लस बॉल वॉलीबॉल तापर एपटे देखिबे पिले something that has 4 legs on which you sit chair माने एठी जो वर्ड भी लेखिबा ता भीतर ए आई थिबा दरकार तो एठी तापर सेकंड फर्स्ट दे देछि क्लू तापर हमें देख वर्ड ता दे देछि तापर हमें सेकंड रो क्लू देखि वर्ड टी कहबा ए आई थिबा वाला वर्ड water that falls from clouds rain a vehicle that runs on track train you use this to color your wall or pictures paint the part of body that helps you think brain a slow moving creature with a shell snail तापरे पिले कोन अछि letters and package you send or receive mail the movements of boats on water the movements of boats on water sail sail all animals have them long or short tail tail तापर कोन अछि पिले steps that take us from one floor to another एटा कोन होनी पिले तमे नोटा देखो water that falls from clouds एटा पर rain तापर एटा on track होची train तापर एटा paint तापर helps you things of brain तापर creatures with a shell of snail snail तापर send or receive mail mail तापर boats on water sail sail तापर long or short tail tail तापर देखो पिले जिंदी स्कूटरिस्ट 3 नंबर कोन दी जिंदी स्कूटरिस्ट थिला ए वर्ड ओरा पे हमको जॉइन करबे लिखिबार अछि गिटारिस्ट गिटार प्लस आईएसटी गिटारिस्ट GUITARIST गिटारिस्ट एठी किछि जॉन माने चेंज होबार नाही पिले वर्ड रे केवल गिटार रे आईएसटी लागिवो मोटरिस्ट एठी भी मोटर रे केवल आईएसटी लागिवो मोटर प्लस आईएसटी MOTORIST मोटरिस्ट टूरिस्ट एठी भी पिले किछि चेंज होबार नाही TOURIST टूरिस्ट एठी पिले किंतु चेंज होबार टिके अछि वर्ड रे आर्ट प्लस ईस्ट आर्टिस्ट ARTTIST आर्टिस्ट तापर कोन देछि पिले देखो कार्टून प्लस IST कार्टूनिस्ट CARTOONIST कार्टूनिस्ट तापर जर्नल प्लस IST जर्नलिस्ट GOURNALIST जर्नलिस्ट तापर 4 नंबर गोटे पैसेज देछि बिले किछटा प्रीपोजिशन ऊपर देछि तो हमको हेटी फिल अप करबार अछि कोन देखो पिले पैसेज टी देखो दोछि गोपी वर्कed hard for his English test
dash he wanted to get good marks. Because he wanted to get good marks that dash test, he was afraid of English. Before test, he was afraid of English. Dash his friend Manoj helped him. When his friend Manoj helped him, dash he hard worked hard. When his friend Manoj helped him, pile. So before the test, he was afraid of English. So his friend Manoj helped him. When he worked hard, he answered all questions correctly. And he was happy. When the result came out, Gopi got A grade. So thanked Manoj for his help. तो मैं इट कह दोछि पिले English test that he wanted to get because the dash test before dash saw his friends when he worked hard. So tapare dash he was happy when the result came. Gopi got A grade, so thanked Manoj for his help. एटी सरला पिले तापर देखिबा एडवर्ब को इनसर्कल करबा को देछि पिले जेमती यूजुअली टुडे टा टाइम को इंडिकेट करूची सेमती एई सातटा लाइन रे एडवर्ब को इंडिकेट करबा को देछि. हमें देखिबा गोपी immediately got up and ran into garden. एटी कोडा हबो एडवर्ब पिले immediately. Sudha often write in her diary. Often all his friends play hockey every day. Every day, I always do my work. Always. Yes, yesterday I ate an apple after lunch. Yesterday, Neha never eats fast food. Never. तापर now they are going to school. Now. तो ये मु कहि दउ आउ थर पिले कोडा कोडा एडवर्ब हबो. फर्स्ट रे इमीडिएटली टा, सेकंड रे ऑफन, थर्ड रे एवरीडे, फोर्थ रे ऑलवेज, फिफ्थ रे यस्टरडे, सिक्स्थ रे नेवर, सेवेंथ रे नाउ. तो एडी सरला पिले 5 नंबर टा. 6 नंबर टा देखिबा. जेमती एठी कॉन्ट्रैक्शन देछि पिले चार की एक्सरसाइज टा एठी देछि. लेट अस राइट रे देखिबा. डू नॉट को हमें कॉन्ट्रैक्ट करके केमती लिखि परिबा. डू एन अपोस्ट्रोफी एस नॉट. तो सेमती इज नॉट को केमती लिखि परिबा. इज एन अपोस्ट्रोफी एस अपोस्ट्रोफी टी. तो सेमती आर को केमती आर नॉट को केमती लिखिबा. आर एन अपोस्ट्रोफी टी. कैन नॉट को कैन एन अपोस्ट्रोफी टी. कुड नॉट को कुड एन अपोस्ट्रोफी टी. डिड नॉट को डिड एन अपोस्ट्रोफी टी. तो ये सेकंड नंबर रे देखो पिले सेमती जो वर्ड एरा अंडरलाइन हेछि ताकू कॉन्ट्रैक्शन करके लिखबा को देछि. इज नॉट को इज एन अपोस्ट्रोफी टी. पराठा इज पराठा अपोस्ट्रोफी इज. तापरे वुड नॉट वुड एन अपोस्ट्रोफी टी. इट इज इट अपोस्ट्रोफी एस. डज नॉट डज एन अपोस्ट्रोफी टी. दे हैव दे अपोस्ट्रोफी भी ई. सी विल सी अपोस्ट्रोफी डबल एल. तो मैं आउथर कहि दउची पिले अंडरलाइन माडुरा. पराठा इज नॉट इज एन अपोस्ट्रोफी टी. ही विल ही अपोस्ट्रोफी डबल एल. पराठा इज पराठा अपोस्ट्रोफी एस.
तापरे would not, would n apostrophe t, it is, it apostrophe s, does not, does n apostrophe t, they have, they apostrophe ve, she will, she apostrophe double l। तो एपटे किछटा अछि बायोडाटा रो क्वेश्चन अछि पिले देखिबा। फिल अप द बायोडाटा ऑफ ए फेमस प्लेयर, एठी देई देई जी पिले बायोडाटा नेम, त आमे नेम जगह रे कोन लिखिबा, दिलीप तिर्की, गेम कोन हॉकी, डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1977, प्लेस ऑफ बर्थ कोन सुंदरगढ़, गेम ही played for India 3 Olympic Games, award received Padma Shri and Arjun Award। कौन मु कहि दउछि पिला उथरे, नेम कोन दिलीप तिर्की, गेम कोन हॉकी, डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1977, प्लेस ऑफ बर्थ सुंदरगढ़, गेम ही प्लेड 3 Olympic Games for India, तापर अवार्ड रिसीव पद्मश्री अवार्ड एंड अर्जुन अवार्ड। राइट द पैराग्राफ ऑन तापर कोन देछि पिले, राइट द पैराग्राफ ऑन दिलीप तिर्की यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बायोडाटा। तो एटी देखो पिले, दिलीप तिर्की वाज ए हॉकी प्लेयर, ही वाज बोर्न ऑन सुंदरगढ़, he was born on 25 November 1977, he is from Sundargarh, Odisha, he played for India in 3 Olympic Games, he won Padma Shri and Arjun Award। आउ थरे कहि दउछि पिले, दिलीप तिर्की was a hockey player, famous hockey player, he was born on 25 November 1977, he is from Sundargarh, Odisha, he played for India in 3 Olympic Games, he won Padma Shri and Arjun Award। तापर 4 नंबर टे देखु पे पहले, व्हाट फेल इन द गार्डन, ए व्हाइट हॉकी बॉल फेल इन द गार्डन। कौन पड़ीथिला गार्डन ने, गोटे व्हाइट हॉकी बॉल, ए व्हाइट हॉकी बॉल फेल इन द गार्डन। वेयर डिड गोपी फाइंड इट, वेयर डिड गोपी फाइंड इट, गोपी याको कोठी खोजी पाइथिला, देखो पिले, गोपी फाइंड इट ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स। कोठी पिले, गोपी फाउंड इट on the heap of dry leaves। What did the children do with the hockey ball? The children played in the playground with the hockey ball। Name the children who played hockey in the story। किए हॉकी खेली थिले एई बॉल सहित एई स्टोरी रे, गोपी, मनोज, दीपक, रमणी और जय। Where did the ball fall? The ball fall in the into a basket of passing scooter। कोठी पड़ीथिला बॉल टी, the ball fall into the basket of a passing scooter। तो एटी तमरो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज देखो बिले, the ball I found is a hockey ball। The dialogue was said by Gopi। तापर the dialogue was said to Deepak। My father brought me a brand new football। The ball I found is a hockey ball। एटा किए कहिथिला, गोपी कहिथिला, काहाकू कहिथिला, दीपक को कहिथिला। ठीक अछि पिले, दीपक को कहिथिला। तापरे my father brought me a brand new football। एटा किए कहिथिला पिले, एटा के my father brought me a brand new football। एटा दीपक कहिथिला पिले, काहाकू कहिथिला, गोपी को कहिथिला। तापर कोन अछि देखो बिले, इटी
I lost a ball 4 months ago. এটা মনোজ কইଥିଲା গোপীକୁ show me the ball and I will tell you. এটা কি কইଥିଲା ରମଣୀ କହିଥିଲା ଗୋପୀକୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦବା ଆମେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ଗୋପୀ ଦୀପକକୁ, ବିଟା କିଏ ଦୀପକ ଗୋପୀକୁ, ସିଟା ମନୋଜ ଦୀପକକୁ ତାପରେ ଡିଟା show me the ball and I will tell you. एटा किए कहिथिला रमणी गोपीକୁ। तो एटी देखो पिले तापरे आउ गोटे देछि प्रिपेयर ए चार्ट विथ द फॉलोइंग कैटेगरीज जेमति देछि कबड्डी आउटडोर गेम को इंडोर गेम एटा आउटडोर गेम तापरे प्लेयर्स नीडेड टीम तो सेमति तमे लिखि परिबो चेस क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल सेटा आउटडोर गेम की इंडोर गेम प्लेयर टीम रे नीडेड की यूनिट रे तमे जणे खेली परबो सेटा लिखबो पले जेमति क्रिकेट आउटडोर गेम टीम इक्विपमेंट कोन नीडेड क्रिकेट बॉल बैट आउ विकेट तो सेमति फुटबॉल आउटडोर गेम प्लेयर टीम नीडेड तो दरकार कोन फुटबॉल तो एमति लिखबो पले एठी तमरो चैप्टर टी सरुची कौन डाउट थिले मते कमेंट रे जणैबो वीडियो टी भल लागिथि वीडियो टी भल लागिथिले लाइक करिवो आ नेक्स्ट वीडियो पय सब्सक्राइब करिवो।